Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. We come up every day from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, discussing the Hindu analysis. Today is 18th January, that is Thursday. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay. So there are some important articles. The first talking about Pakistan condemns airstrikes by Iran, recalls ambassador. Then here is an article talking about Supreme Court will hear appeal filed by Uddhav Thackeray camp on January 22. And this one is actually talking about Supreme Court actually ordering authorities to act tough against hate speech and all. So let's start with this one. Yesterday we have discussed about this as well. That actually what happened was Iran had actually attacked some militant bases in Pakistan in actually Balochistan province. I hope you are aware of that. And Islamabad says unprovoked strikes killed 2 children and all. This aapko pata hoga. So the Iran has said that there is a militant organization called as Jaish al-Adl and they are attacking their military bases, militant bases and all. So let me show you. Here is India. Sorry, here is Iran. This one is Pakistan. And here you will find Balochistan. Okay, and here is Iran. So Iran has actually attacked in this Balochistan region the militant bases of Jaish al-Adl. That is what the Iran has said. Now, just before that, this was in the news that before 1 or 2 days back, Iran actually attacked the places in Iraq and Syria as well. So Iran attacked some places in Iraq and Syria 1 or 2 days before that, and then after that it attacked the province of Balochistan in Pakistan. So according to the Iran, they are actually attacking. Why? Because first, I hope you are aware. Here Iran में एक जगह है Kerman Shah. Okay, here actually a bomb blast happened where almost 90 to 100 people died, and that was an anniversary, the death anniversary of one of the senior army general of Iran, General Qasim Soleimani. So on that death anniversary, a blast happened where around 90 to 100 people died. And that is why Iran was attacking some places in Iraq, Syria, as well as in the Pakistan and all. So this was in the news. So when it actually attacked Pakistan, and Pakistan actually decided to withdraw the ambassador, condemns the airstrike by Iran, recalls the ambassador. Islamabad asked Iranian envoy who is in Tehran not to return. So Islamabad ने कह दिया, नहीं पाकिस्तान ने कह दिया कि आप वापस नहीं आइए. Iranian ambassador को भी कह दिया कि आप मत आइए. मतलब actually you can say it's considered as downgrading, you can say, of diplomatic relations. Hai na? So Army of Justice Jaish al-Adl is a Sunni militant organization founded in 2012 and all. That is what the article says. We had discussed it yesterday as well. So I hope you are aware of this. ये सब लोगों ने कल discuss किया था. No, the most important thing is when the attack happened, when Iran attacked it, I think perhaps 1 day or few hours back, the Iran's foreign minister had met the caretaker prime minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakkar, at World Economic Forum, Davos, Switzerland. Okay, so आपको पता होगा ये चल रहा है Davos में from 15 to 19 January. This World Economic Forum annual meeting actually is being organized every year in January. It actually happens. तो यहाँ पर है, मैंने आपको कल ही बताया था, here is India, this is actually Switzerland, है ना. तो स्विट्जरलैंड में यहाँ पर Davos जगह है, ठीक है. Okay, yes. So here actually they met, the Iranian foreign minister met the Pakistan's prime minister, and few hours later the attack happened and all. So this was in the news and all. Hai na? Pakistan recalled its ambassador to Iran on Wednesday, a day after Iran launched airstrikes on Pakistan that it claimed targeted base of a militant Sunni separatist group and all. And they attacked, the Pakistan denounced it. It has called it as blatant violation of its airspace and all. Last night, unprovoked and blatant breach of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law and all. So the Pakistan has said it is violation of international law, and that is why they are withdrawing it. Okay, so it is considered as a sort of downgrading diplomatic relationship, you can say like that, because they are downgrading diplomatic relationship, right? Why? Because actually the Pakistan has withdrawn the ambassador, and it has indirectly said you should also not send your ambassador and all like that, है ना. तो ये चीज एक तरह से डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिलहाल के लिए तो ऐसे ही समझा जाएगा. As far as India is concerned, India has supported Iran terms strikes act of self defense. इंडिया ने सपोर्ट किया है ईरान को, राइट.
it cites its position against terrorism and all. So India has said that yes, Iran is correct because actually for self-defense, Iran is supposed to take all those decisions which is important for them and all, है ना? So says India has understand its action in self-defense. Iran strikes inside Pakistan had come just a day after External Affairs Minister S. Jaishankar visited to Tehran. एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि जब ईरान हैज जस्ट अटैक्ड 1 or 2 days बैक, it has attacked Pakistan, and just 1 or 2 days before that, the S. Jaishankar, the foreign minister of India, had visited Iran. उस एक ही 2 दिन पहले एस जयशंकर साहब जो है वो ईरान में थे. आप देख सकते हो, ही इज स्टैंडिंग along with the Iranian counterpart, right? So and when he went there, देखो 16 जनवरी की न्यूज है, so hardly 2 days back. Farsi to be one of India's 9 classical languages, says S. Jaishankar. Why Farsi? Farsi and Persian are actually same language, ठीक है, which is spoken in Iran and Afghanistan region, primarily in Iran. So the term Persian, Farsi, they have come actually from Iran, ठीक है. तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में पर्शियन या जिसको आप फारसी कहते हो वो भी ऐड किया जाएगा इंडिया में. when he actually visited Iran, he said that. Okay. There's a community from Iran. They came to India that are called as Parsis. I hope you are aware. And Parsi or Zoroastrians, and they are actually at a very good position. I hope you are aware. Parsi, Persian, सब वही same root है, ठीक है. People who belong to Zoroastrian religion. So can you give some example of famous personalities in India who are Parsis? किसी का आप नाम बता सकते हो? I'm waiting for the answers. Any Parsi who is at a very good position. So like in legal field, there is a person called as Salik Nariman. His son was a former judge, his son was the judge of Supreme Court as well. Then we have Mr. Ratan Tata. Yes, Ratan Tata. Yes, Priya Chavan. Very good. Then we have, I think, Cyrus Mistry also, who died, I think, 1.5 years back in an unfortunate car accident. Shapurji Palanji group के founder थे ना. Yes. So Ratan Tata is more famous, but in legal field, you should be knowing Mr. Salik Nariman as well. ठीक है. One of the topmost lawyer, है ना, in Supreme Court of India. Yes. Okay. So just have an idea about it, है ना. So government of India has decided to include Persian or Farsi language as one of the 9 classical language in the new National Education Policy 2020. So when he visited Iran, he said this because Farsi or Persian is actually the most prominent language in Iran. ठीक है. Now National Education Policy 2020 में आई थी, उसके तहत उन्होंने बताया. Currently we have how many classical language? Currently how many classical languages are there? बताइए कितनी classical languages हैं इंडिया में? Okay, and there is another question. Question ये है कि which of the following is not a classical language in India? Tamil, Urdu, Sanskrit, Odia. What is the right answer to this question? इसमें से कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है और टोटल क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में अभी कितने हैं? यस. कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज? बी केयरफुल, आई एम नॉट आस्किंग नेशनल लैंग्वेज, आई एम नॉट आस्किंग ऑफिशियल लैंग्वेज, आई एम आस्किंग क्लासिकल लैंग्वेज. देखो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें. एक नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, एक क्लासिकल लैंग्वेज होता है, ठीक है. ये तीनों अलग अलग होता है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज? आई हैव नॉट गॉट द राइट आंसर. अभी तक सही आंसर नहीं मिला है. ए सी डी लोगों ने बता दिए, जो नहीं बताना था वही नहीं बताया. सो बी, उर्दू इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया. ओके, सो करेंटली वी आर हैविंग 6 क्लासिकल लैंग्वेज है. तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया. ठीक है, सो दीज आर द 6. ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ अभी 6 है ना. ओके, 3 और ऐड करने का प्रोपोजल है. सो करेंटली वी हैव 6 + 3 पाली, पर्शियन एंड प्राकृत. सो दीज 3 आर एक्चुअली प्रोपोज्ड, सो इट विल बिकम 9. ठीक है, तो ये पर्शियन की बात कहिए ना. So these 3 are actually, according to the National Education Policy, there is a proposal that these 3 languages, Pali, Persian and Prakrit, will be added. Currently we are having 6. So 6 + 3 9 हो जाएगा, है ना. So that is what Mr. S. Jaishankar is talking about. कि Farsi to be one of India's 9 classical language, तो 6 + 3 9 हो जाएगा. ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए. You will not find Urdu in this classical language. ठीक है, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि I am talking about the 8 scheduled language. No. This 8 scheduled language and classical language are different thing. 8 schedule में there are 22 languages. Classical language अभी 6 है, 3 और का proposal है 9 बनने की. ठीक है,
so do not get confused. ठीक है, Urdu is mentioned in 8th schedule, but Urdu is not in classical language. ठीक है, so here B is the right answer. ये सब हम लोग will be discussing it in detail in paid classes कि what is national language, official language. ठीक है, okay. If you are watching this class, नीचे जाना, नीचे description section में एक link है one-on-one session के counseling session के लिए, इस link पर click करो and you will get this actually form, and please everyone should fill this Google form. Let's move on to the next one. Supreme Court will hear appeal filed by Mr. Uddhav Thackeray camp on January 22. Now what has happened was ki, 1 or 2 days back we had discussed this, that actually the Speaker of Legislative Assembly of Maharashtra, Mr. Rahul Narvekar, has decided that the Shiv Sena led by Mr. Eknath Shinde is the real Shiv Sena. Actually क्या हुआ था कि Shiv Sena got split in June 2022. It was in the news that the Shiv Sena got split between Eknath Shinde, Mr. Eknath Shinde camp and Mr. Uddhav Thackeray camp. अब इसमें से डिसाइड करना था कि रियल शिव सेना कौन है. सो द स्पीकर हैज डिसाइडेड दैट इट इज मिस्टर एकनाथ शिंदे लेड शिव सेना व्हिच इज द रियल वन. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे लेड कैंप हैज एक्चुअली वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड ओके वी विल हियर द मैटर फ्रॉम 22 जनवरी. सो 22 जनवरी से हम लोग सुनेंगे ये अपील. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर इफ अ स्पीकर टेक्स एनी डिसीजन regarding disqualification or any such decision, yes, it can be challenged in the court, है ना, what we call it as judicial review, है ना. So let's see. So according to the speaker, the real Shiv Sena is led by Mr. Eknath Shinde. ठीक है, now let the Supreme Court decide. They have filed a petition. Okay, the next one, top court wants authorities to act tough on incitement to violence, hate speech. Now अब ये है कि this is actually talking about the Supreme Court actually was hearing a matter and all where actually the Supreme Court has said that incitement क्या होता है, भड़काना. देखो मैंने बताया ना आर्टिकल, if you read article 19, I have taught in paid classes freedom of speech and expression, but at the same time article 19 clause 2 talks about reasonable restrictions. ठीक है, article 19 talks about 19 clause 2 reasonable restriction of freedom of speech. उसमें से एक है कि incitement to offense, यानी this is not freedom of speech if you are actually giving a hate speech or if you are actually inciting violence. This is not freedom of speech, rather you can be arrested and all. Okay, so that is what the Supreme Court has said कि the authority should act tough. मतलब क्या है कि if someone is giving hate speech, the person should be immediately arrested or whatever the legal cases should be initiated against that person. That is what the Supreme Court has said and all. Okay, said authorities need to be conscious that no incitement to violence and hate speech are permissible and all. We require the authorities to conscious that no incitement to violence, hate speech are permissible. The DM and SPs, DM means district magistrate and SP superintendent of police. They are actually supposed to take necessary steps that should be required. जो step है वो जरूर ले. That is what they have talked about. The Supreme Court has talked about. Now the next is joint SIT to probe attack on ED team Calcutta High Court. तो actually क्या हुआ था, few days back this was in the news that an ED enforcement directorate team was going to raid somewhere and it was attacked by some people and all. तो इसके लिए फिर the High Court has said that actually ED went to the High Court that there should be a CBI probe. तो Calcutta High Court ने कहा कि okay we will form a SIT should be formed, a special investigation team. SIT का मतलब होता है a special investigation team should be formed comprising of CBI officers and Bengal police to investigate attack on ED officers. ठीक है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है पूरी तरह सीबीआई को नहीं दिया जाएगा लेकिन एक एसआईटी बनाई जाएगी जिसमें सीबीआई के भी ऑफिसर रहेंगे और बंगाल पुलिस के भी, और उसको इंक्वायरी करेंगे द इंक्वायरी दैट टू रिगार्डिंग द अटैक ऑन ईडी ऑफिसर्स एंड ऑल. ओके, the court criticized the police ongoing police investigation and expressed dissatisfaction with the failure to arrest the prime accused. तो कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट has said that till now the accused has not been arrested and we are not satisfied with the police investigation. Police should be more agile, है ना, as far as conducting the inquiry regarding this case is concerned and all. खैर ये सब था. ठीक है, so you got it, है ना. Now just before moving on guys, we are running this open mock test. So MHCT law के लिए this is done. Now we are running this जामिया के entrance exam के लिए from 15 to 21 January and SLAT के लिए 22nd to 28 January. This is our actually online classroom program. Go to our app, go to CLAT section and you can click here talk to our counselor.
And Sunday को 1 PM and 3 PM we are running this CLAT legal and GK booster series. 3 PM को on Sunday we will be meeting you. So do join me. That would be very very beneficial. Then 2024 के लिए test series we are running. So do join this as well. And ये 2025 के लिए complete course है. This is a complete course. So if you are interested, you can call on this number 95388 Okay. Yes. Let's move on further. India's foundational battle on the Hindu question and all. अब देखो ये क्या है, this is not important from exam point of view, so important नहीं. If you are interested, you can read it. But उसमें कुछ terminologies है that I'll be discussing it. For example, the author has talked about Vasudev Kutumbakam. And why this terminology is important? Because this was the theme of G20 summit which was conducted by India last year. September 2023 में G20 summit हुआ था ना? Okay. So the theme was Vasudev Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. Okay. Now, so this actually you are supposed to tell me, please tell me that this has been taken from where? Maha Upanishad, Mundak Upanishad, Atharva Ved, Rig Ved. कहाँ से लिया गया है? Anyone? Vasudev Kutumbakam has been taken from where? सबको like button press करते जाओ. Everyone please press the like button and subscribe to our channel. Yes, Priya Chavan has answered it correctly. Very good. The right answer actually is Maha Upanishad से लिया गया. ठीक है. मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया ना. सत्यमेव जयते, which is actually a part of national emblem है ना. So Maha Upanishad है ना. So आप देख सकते हो यहाँ पे Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future was drawn from the ancient text Maha Upanishad. So this has been in the news. Yes, Priya Chavan, Alok Pratap Singh, Truptesh, Naved Rana, you all were right. A is the right answer. ठीक है, टू दिस क्वेश्चन. इसके अलावा भी और कुछ टर्म्स जैसे यूज किया उदाहरण ने, जैसे सर्वधर्म संभव, ये आपको पता होना चाहिए. इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन. ठीक है. सो दीज आर द टर्म्स यू शुड बी नोइंग इट है ना. द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. देन आप चाहो तो ये पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सो वी आर स्किपिंग दैट. अब साइड में एक आर्टिकल थी, वेस्ट एशिया नीड्स ए सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम विद द पैलेस्टीन इशू एट द सेंटर, रीजनल टर्मोइल पर एडिटोरियल है. एडिटोरियल तो ऑथरलेस होता है. इट रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का ओपिनियन रिफ्लेक्ट होता है यहाँ. ठीक है. अब देखो वेस्ट एशिया किसको कहते हैं? सो दिस इज साउथ एशिया, जहां पे हम लोग रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. दीज आर कॉल्ड एज साउथ एशिया है ना. ओके. दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया. इसको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, ये वाला रीजन. सऊदी अरब, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, ईरान. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया. ठीक है. ओके. Kaski wala region and all. Now, specifically, they're talking that actually turmoil, like a regional turmoil, needs a security equilibrium. Why they're talking about it? Because if you are seeing it right now, currently here is Israel, and Palestine conflict is happening and all. I hope you are aware of that. So, abhi recently फिर क्या हुआ कि ईरान में blast हुआ था, and after that Iran has attacked places at Iraq and Syria, and I mean in Pakistan as well. We have just discussed it. तो मामला यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटाइल मामला है. सो आई मीन थिंग्स आर नॉट फाइन एंड ऑल. इफ यू सी द वार ऑन गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास. इजराइल हैज कैरिड आउट टारगेटेड स्ट्राइक्स इन लेबनान, सीरिया, किलिंग हिजबुल्लाह, हमास, इरानियन कमांडर्स एज वेल. अब देखो ये बता रहे हैं कि जो वॉर है वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है. इट इज नॉट लिमिटेड टू इजराइल एंड पैलेस्टीन. रादर इन लेबनान देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह. सो एक्चुअली इजराइल इज फाइटिंग हिजबुल्लाह, हमास. देन इन फैक्ट एट सम प्लेसेस इन सीरिया एज वेल, even in Iran and Iraq and all. So that is what they are talking about. लिखा ना, Hezbollah, Hamas, Iranian leaders and all. So that is what. मतलब ये लिख रहे हैं कि ये सिर्फ सीमित नहीं है कि यहाँ तक है ना. The war on Gaza is no longer about Israel and Hamas. It's actually expanded है ना. तो पूरा वेस्ट एशिया में है ना. Iran backed militia in Syria and Iraq have attacked US forces in Syria and Iraq. ठीक है. तो बहुत सारे सीरिया और इराक में बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो कि ईरान सपोर्टेड है, जैसे ऑथर कह रहे हैं. और उसने यूएस फोर्सेस इराक में ना, इराक और सीरिया में वहां अटैक किया है. सो ईरान बेस्ड मिलिशिया ना, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. हाउथीज द ईरान बैक्ड रेबल्स ऑफ यमन हैव टर्न्ड द रेड सी इनटू अ बैटलफील्ड. अब एक और चीज काफी न्यूज में, आई होप यू आर अवेयर, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि यमन में एक ऑर्गेनाइजेशन है हाउथीज, एंड मेरी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैव सेड दैट इट इज बैक्ड बाय, सपोर्टेड बाय ईरान. तो यहां से अगर कोई शिप जाती है, जैसे इजराइल सपोर्टेड, इजराइल बैक्ड शिप, सो हाउथीज हैव अटैक्ड देम. ये भी न्यूज में था फ्यू डेज बैक. सो इट मींस ये पूरे रीजन में कंफ्लिक्ट टाइप का चीज है, सिर्फ यहां पर नहीं. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इजराइल एंड हमास और इजराइल एंड पैलेस्टीन, बट नाउ इट इज एक्सपैंडेड टू द एंटायर रीजन एंड ऑल. दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है.
है ना. So these are the things. Then recently we have seen in Kermanshah, जहाँ पर actually almost a blast happened where almost 90 to 100 people died. ये हम लोगों ने discuss किया था already. Iran claims to have destroyed an Israeli intelligence outpost in Iraq, Kurdistan, training camp of Sunni Islamists in Syria and Pakistan. जो कभी हम लोगों ने बताया ना कि ईरान ने सीरिया में अटैक किया, पाकिस्तान में अटैक किया एंड यहाँ इराक में अटैक किया. So Iran has said that it has actually destroyed the places. Some इसने क्या लिखा, देखो क्या लिखा है, आउटपोस्ट इजराइल्स इंटेलिजेंस आउटपोस्ट. तो मतलब कहने का मतलब है कि मोसाद जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की, उसके आउटपोस्ट को अटैक किया इराक में, सीरिया में, एंड दे हैव अटैक्ड इन पाकिस्तान जश्न आदल, व्हिच इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज व्हाट एक्चुअली द ईरान इज टॉकिंग अबाउट कि दिस इज देयर वाज कौन आदिल कुछ करके समथिंग था, है ना. दिस इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन which was living in Balochistan region, and Iran has attacked it. Army of Justice they call it in English. So that is what is being talked about. ठीक है. So this is a classical case of regional anarchy. उस पूरे region में anarchy है, where countries are taking unilaterally military measures to address their perceived security challenges. तो country जो unilaterally नहीं अकेले single handedly जो they are taking the military measures, means attacking and all. So that is what they are talking about. So October 7 अटैक के बारे में से पहले, जस्ट पहले, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए जेक सुलिवन हैड सेड दैट द मिडिल ईस्ट इज क्वाइटर टुडे दैट इट हैज बीन 2 decades above बिलो बिफोर. तो जैसे 2023 से में जो 7 अक्टूबर का अटैक से जस्ट पहले एनएसए ने कहा था, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, कि वो ज्यादा क्वाइट है एज कंपेयर टू 2 decades ago, यानी 2003 के मुकाबले 2023 में वेस्ट एशिया इज मोर एक्चुअली क्वाइट टुडे. दैट इज व्हाट इट हैज सेड. But after 7th October things have changed and all. क्यों? Because 7th October से पहले अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, ये 2020 में काफी न्यूज में था. So let me talk about that. So Israel and UAE had done Abraham Accords. Okay. And there was a proposal of one more thing, जिसको हम लोग IMEC कहते हैं, India, Middle East, East Asia, Europe Economic Corridor. This was being talked about in G20 summit सितंबर में जो हुआ था लास्ट ईयर, इसमें बात हुई थी, है ना. मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो ऐसे रास्ता है जाने का ईस्ट यूरोप, दूसरा रास्ता है यू कैन गो लाइक दिस इफ यू वांट टू गो फ्रॉम. तो ये आईमेक की बात हो रही थी ना कि यहाँ यूएई से होके इट विल गो टू इजराइल एंड देन इट विल गो लाइक दिस. ठीक है. तो ये वाला जो लाइन है ना, दिस वन इज कॉल्ड एज आईमेक की बात हो रही थी. बट नाउ द इशू इज कि यहाँ पर नाउ यहाँ पे यूएई इज देयर, सऊदी अरब इज देयर, जॉर्डन इज देयर. नाउ इजराइल में वॉर हो रहा है. So there is a war that is happening. So there is a people have raised the question that whether now IMEC will be a successful thing or not. तो ये proposal आया था, तो अब तो इस पे question भी raise हो रहा है कि अभी possible हो भी सकता है कि नहीं. This was talked about G20 summit which happened last year September. ठीक है. So that is what you should be knowing it. The October 7 Hamas attack in Israel's subsequent vengeful offense in Gaza have not only brought Palestine back to the center of West Asia but also lit fires and all. So that is what they are talking about. ठीक है. So these are the things, है ना. Okay. A search for deterrence in Red Sea. Again the same thing. देखो मैंने बताया ना, रेड सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो why is Red Sea so important? ये पहले समझना है. देखो यहाँ पर इंडिया है, this one is Red Sea. ठीक है. Okay. देखो earlier actually if you want to go from England, UK to India, मान लीजिए मुंबई है यहाँ पे, तो शिप से कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे समथिंग, मतलब ऐसे रफ मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसे जाते हैं, है ना. Okay, but after actually 1869 when Suez Canal was made, तो आप ऐसे जा सकते हो शॉर्टकट, है ना. So this is shortcut. Okay, काफी टाइम बच जाता है इसे. Now so here is actually Suez Canal. Okay, सिमिलरली अगर आपको जैसे इंडिया और इजराइल का बहुत अच्छा रिलेशन, तो यहाँ पे इजराइल है और इजराइल से मुंबई जाना, तो कैसे जाओगे? यहां से चले जाओगे शॉर्टकट शिप से. ओके. नाउ सो हियर इज एक्चुअली सुएज कैनाल जो कि इजिप्ट में है ना. और अगर आपको ये वाला रूट नहीं लेना होगा तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा. दिस इज वेरी लॉन्ग रूट, राइट, विच इज अ वेरी लॉन्ग रूट एक्चुअली. नाउ द इशू इज कि यहां पर हियर इज यमन. ठीक है. अगर आप देखोगे जूम करके यहाँ पे, तो अगर इजराइल से कोई शिप आ रही, सो इट शुड बी कमिंग लाइक दिस टू मुंबई. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सुएज कैनाल ये वाला काट के बनाया गया, सुएज कैनाल 1869, है ना. Now, but here are Yemen, you will find Houthis. They are attacking ships which are actually supported by Israel and all. Now, it becomes unsafe for the Europeans and the Israeli ship to move from this place. तो उनको पूरा लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा ना, इससे नहीं तो ये वाला रूट से जाना पड़ेगा, लंबा वाला रूट से.
ओके, सो यू गॉट दैट, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला रास्ता है ना, इसीलिए रेड सी देखो ना, यही ना रेड सी. So that is what the author is talking about, a search for deterrence in the Red Sea. तो Red Sea जो है ना strategically business point of view से, military point of view से, it becomes very important. And that is what the author is talking about, है ना. Now before that there is a question. पहले आप इस question का आंसर करो. Which of the following state connects Red Sea with Arabian Sea? State of Gibraltar, Bab al-Mandab, Malacca, Makassar state. What's the right answer? Red Sea से Arabian Sea को connect करने वाले state का नाम बताइए. We have taught this in our paid classes, तो ये सब बताया होगा, है ना. और भी बहुत जगह पहले भी YouTube सेशंस हुए थे, तो we have discussed it earlier as well. What is the right answer? Yes, anyone? आप लोग ट्राई करो, even if you do not do it, you can guess it. ठीक है, चलो मैं मैप में बता देता हूं ताकि आप, ये वाला रेड सी है, ये वाला अरबियन सी है, यहाँ पे यमन है, तो ये वाला पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है, कौन सा स्टेट है? दिस वन आई एम आस्किंग, यू गॉट इट? मैं कौन सा पूछ रहा हूं? ये वाला पूछ रहा हूं, ये वाला रेड सी कनेक्टिंग अरबियन सी, बिकॉज हियर एक्चुअली हाउथीज हैव अटैक्ड, तो ये वाला लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. कुछ लोग ए बता रहे, कुछ लोग सी बता रहे. आई हैवंट गॉट द राइट आंसर येट. सो द राइट आंसर इज स्टेट ऑफ बाब अल मंदब. बी इज द राइट आंसर. ठीक है, बाब अल मंदब इसको कहते हैं, ये स्टेट को, रेड सी और जो अरबियन सी कनेक्ट करता है, और यहीं पर एक्चुअली हाउथीज ऑफ अटैक. सो दिस बाब अल मंदब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यस ऋषि कुमार झा, यू वर राइट. स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कुछ लोगों ने आंसर किया. स्टेट ऑफ गिब्राल्टर ये वाला है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, ये अटलांटिक ओशन है, तो ये वाला ना, इसको गिब्राल्टर स्टेट कहते हैं. ठीक है, और मलक्का स्टेट यहां पर है, दिस वन इज मलक्का स्टेट. ठीक है, खैर, सो दिस बिकॉज ये वाला पता होना चाहिए, बिकॉज जो न्यूज में वो तो पता हो, है ना, सब नहीं याद रहे, तो जो न्यूज में एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग अबाउट स्टेट ऑफ बाब अल मंदब. ठीक है, यस प्रिया चवन, श्वेता, आलोक प्रताप, यू वाला राइट. हाँ, ओके, सो सर्च फॉर डेटरेंस इन द रेड सी, उसी की बात कर रहे हैं. हाउथी रेबल्स हैव अटैक्ड बेस्ड इन यमन इन रिस्पांस टू इजराइल्स अटैक्स इन बॉम्बिंग इन गाजा, हैव अटैक्ड मर्चेंट शिपिंग यूजिंग द रेड सी एंड ऑल, है ना. So with attacks that began in mid-November, the Houthis using drones and anti-ship ballistic missile have tried to boarded the ship Galaxy Leader. तो एक्चुअली क्या ये शिप है, इस पर ना लोग हेलीकॉप्टर से चले गए थे, यूजिंग हेलीकॉप्टर. सो एक्चुअली दे लैंडेड ऑन दिस शिप विद द हेल्प ऑफ द हेलीकॉप्टर एंड ऑल. ठीक है ना, गैलेक्सी लीडर ये शिप थी. सो इस पे एक्चुअली दे हैव हाईजैक्ड इट. द वेरियस मेथड्स एंड चॉइस ऑफ वेपनरी आर एन इंडिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ एसेट्स अवेलेबल टू द रेबल्स एंड ऑल. So they are actually, I mean, the Houthi rebels have these types of assets, यानी उनके पास हेलीकॉप्टर वगैरह सब है. That is what the author is talking about. Okay. So the situation in Red Sea is growing in complexity while the impact on stability is immense. The impact on trade is a growing concern. Yes. यहाँ पे से ट्रेड बहुत बड़ा होता है. देखो, अगर आपको, जैसे हमने आपको कई बार बताया, मान लीजिए इंडिया और यूरोप का जो शिप से जितने भी ट्रेड होगा, मान लीजिए इंडिया इस सब रीजन में, तो ये शॉर्टेस्ट रूट है ना. तो अगर ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा रूट, तो ऐसे लाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, ट्रेड का प्राइस बढ़ जाएगा ना, कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज शिप को लंबा लाओगे तो पेट्रोल डीजल जो भी वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड, फ्यूल ज्यादा चलेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, है ना. सो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट द ट्रेड एंड ऑल. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना. दिस आल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट द क्लेम ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी आफ्टर इयर्स ऑफ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज. तो ये सब बता रहे हैं. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना. हाई रिस्क एरिया हो गया, जो रेड सी वो वाला रीजन है, वो हाई रिस्क एरिया हो गया. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कोई ट्रेड बिजनेस के लिए कोई शिप जा रही है, वो वॉर में नहीं इन्वॉल्व हो, तो उस पर भी बम गिर सकता है या उस पर भी अटैक किया सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन अ वॉर इज हैपनिंग एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन. So the same impact are re-emerging with similar operational limitation as hijacked ships that could be used by Houthis as a mothership to launch attacks and all. Yes. अब वो ये बता रहे हैं कि मान लीजिए Houthis ने कोई शिप को हाईजैक कर लिया, अब जो हाईजैक शिप है उसको यूज करेंगे किसी और को अटैक करने के लिए. That can also happen. So that is what the author is talking about, है ना. Houthi rebels are using drones, है ना, ASBMs of great concern and all. So ये सब भी वो लोग यूज कर रहे हैं. So they are having modern advanced technologies. It is said that Houthis are backed by Iran. ये सब चीज बहुत सारे लोगों ने कहा है. Many experts have said it and all. Then he is talking about combined maritime forces of USA, which is headquartered in Bahrain. And combined maritime forces is actually having 39 nations, including India is as well there. देखो, ये combined maritime forces है. इसमें if you see it, there are 39 member nations. तो यहाँ पे इंडिया भी होगा कहीं पे, है ना. Okay. और इसका जो मेन लोकेशन है वो बहरीन में. So where is Bahrain? So where is India? This is Iran, Saudi Arab, Qatar. ये वाला छोटा सा कंट्री है बहरीन. यहाँ पे लिखा हुआ ना.
So out of the 9 nations mentioned initially as part of the operation, 3 NATO allies of US, that is France, Italy and Spain, declined to be part of it. जो एक 39 मेंबर अलायंस है, एक तरह से कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का, नेवी का, उसको उसका पार्ट जो नाटो की 3 कंट्री नहीं है, दैट इज व्हाट दे हैव सेड. ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं. तो इंडिया विच ज्वाइन द CMF एज एसोसिएट पार्टनर इन 2022 एंड वाज अपग्रेडेड टू फुल मेंबर इन नवंबर 2023. यानी इंडिया जो है CMF का कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का फुल मेंबर बन गया है. दिस कुड बी ड्यू टू इंडिया ईरान रिलेशन डिस्पाइट द स्टॉपेज ऑफ ऑयल एंड ऑल. ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, क्यों उतना डिटेल जाओगे. The Houthis are clearly taking advantage of this division and seems to be questioning and all. ठीक है, I'm not going very much in detail because जो चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना याद रखना. जैसे रेड सी के बारे में, हाउथीज के बारे में, ठीक है, बाब अल मंदब के बारे में, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, अगर हम और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन में, तो फिर इट बिकम्स वेरी एक्स्ट्रा फॉर यू. ठीक है, so that is why I'm not going that in detail. ठीक है. Okay, the next is Trump seems the favorite to win the Republican nomination. ये भी मैंने बता दिया था. देखो एक्चुअली क्या होता है इसका, ये समझ लेना. Yesterday we had discussed it. Okay, Iowa caucuses. एक्चुअली क्या समझ लो, ये रिपब्लिकन पार्टी का इंटरनल इलेक्शन था. मैंने बताया ना कि there are 2 political parties. One is called as Republican Party in USA. This is the party symbol, हाथी, elephant, and this is Democrat Party, है ना, और ये है एक्चुअली डंकी. ठीक है, सो रिपब्लिकन पार्टी का इंटरनल इलेक्शन था टू एंश्योर हु शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. तो यहां तो अभी देखो डेमोक्रेट पार्टी में जो है जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट. ठीक है, सो ही विल बी द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम आल्सो ही विल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. बट रिपब्लिकन में कौन होंगे, सो उसके लिए इलेक्शन हुआ था. एंड इफ यू सी इट केयरफुली, डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन द टॉप. सो मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रंप विल बी द presidential candidate. इसमें से एक इंडियन ओरिजिन के थे, विवेक रामास्वामी. he was very much in the news, but इनका मतलब he got 4th rank and all, and he later decided to withdraw. वापस उन्होंने ले लिया था. ठीक है, so that is what you should be knowing it, है ना. तो इंटरनल इलेक्शंस वगैरह होते हैं. ठीक है, so that is what is being talked about. ये डोनाल्ड ट्रंप का it was a very famous slogan last time when Donald Trump was fighting elections. Make America great again 2016 इलेक्शन में, उस टाइम पर न्यूज में था, है ना. सो दैट इज व्हाट, है ना. सो एक और चीज ये हुआ था कि जब वो व्हेन ही वाज एक्चुअली लीविंग द प्रेसिडेंट ऑफिस, तो उस टाइम पर कैपिटॉल हिल में आई मीन पीपल केम, है ना, लॉट ऑफ मॉब केम, एंड देयर हैज बीन एलिगेशन दैट डोनाल्ड ट्रम्प इंसाइटेड इट. ये सब एलिगेशन भी उन पर लगा था. दिस इज आल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ऑन डिलिस्टिंग द सम कुकी ज़ूमी ट्राइब्स एंड ऑल. अब इस पर एक एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल, इसमें भी बेसिक चीज जानना होगा. देखो एक्चुअली क्या है ये, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मणिपुर. ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, यहाँ पे मणिपुर है. ठीक है, सो मणिपुर में आई होप यू आर अवेयर देयर हैव बीन सिंस ऑलमोस्ट अप्रैल और मई लास्ट ईयर देयर हैव बीन डिस्प्यूट बिटवीन मीतीज एंड कुकीज. आई होप यू आर अवेयर. So this is what. So Manipur government has been asked by the center to examine a representation seeking the delisting of certain tribes. तो एक्चुअली हुआ क्या था पहले आपको समझना है, इसके बैकग्राउंड में जाना है. There are 2 communities, मीतीज, है ना, कुकीज. तो they are actually given scheduled tribe status but they are not. अभी इनको मिला नहीं है. But the Manipur High Court had said, directed the state government to consider including Meeti community in scheduled tribe. Okay. तो मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि मीतीज को भी शेड्यूल ट्राइब में स्टेटस दिया जाए. बट दिस एक्चुअली फियर्ड आई मीन बिकेम फियर फॉर द कुकीज कम्युनिटी एंड ऑल. इसमें डिटेल में लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वी टीच इन डिटेल इन आवर पेड सेशंस. तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि व्हेन द मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टेड इट, the matter went actually things became uncontrolled. There have been violence started and all. After that, Supreme Court actually was not very happy with the High Court judge's order, and he said that the judge's order was not correct and all, the Manipur High Court. Why? Because it is not the job of the judiciary. Rather, if you read Article 341, ये scheduled caste के लिए, और 342 पढ़ोगे तो scheduled tribe के लिए, it is the job of the president to pass an order who should be included in scheduled caste or scheduled tribe. ठीक है. So that is what, in fact, there is a previous judgment of Supreme Court 5 judge bench order where it is not the judiciary, rather the executive who is supposed to decide which community should be added in scheduled tribe. And that is why the Supreme Court was not happy with the High Court order. ये वाले order से Supreme Court happy नहीं थे, in fact, है ना.
सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप हाई कोर्ट जज फॉर ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर एंड ऑल, इस तरह की आर्टिकल भी आई थी. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. अब इसके बाद क्या हुआ है कि नाउ देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुछ लोग गए रिप्रेजेंटेशन सीकिंग. सो एक्चुअली देयर इज अ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. Okay, so they have sent some of the people and they have requested the government of Manipur that cookies and zoomies, जो cookies हैं, they should be removed from scheduled tribe. ठीक है, मीतीस तो भी नहीं है scheduled tribe में, but the Manipur High Court had said, हमने बताया कि that they should be added in scheduled tribe. Cookies were already there, but there is a proposal. I mean, they have gone. They have requested, the National Secretary of the Republican Party of India, they have gone and they have requested that cookies and zoomies should be delisted, मतलब हटा दिया जाए, removed from the scheduled tribe list. Now, because if some tribe is added in scheduled tribe, it gets some special benefit. I hope you are aware of that. We are not going in that detail, what are the benefits they are given, because that will become a part of paid syllabus, paid class and all. Okay, so just have an idea about it. Now the next one is India defends Iran cites its position against terrorism. ये मैंने already discuss कर लिया first page में, that India has supported that yes, Iran is right as far as attack on Pakistan is concerned and all, है ना. The next is rainfall rising in over half of India sub district says 4 decade survey. इसको थोड़ा देख लेना कि एक कोई सर्वे आया है जिसमें ये बता रहे हैं कि रेनफॉल जो राइज हुआ है. That is what you should be doing. ये रिपोर्ट कभी कभी आती है, ऐसा रिपोर्ट एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, दिस इज रिलीज बाय एनजीओ प्रथम. ठीक है, और फिर एनजीओ ये बताती है, सो दे कम अप विद द रिपोर्ट कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ टीचिंग एंड ऑल, की मतलब कैसा आउटकम है, यानी कि अगर जो पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो दे हैव सेड दीस थिंग्स, मोर देन हाफ स्ट्रगल विद द डिवीजन एंड ऑल. ठीक है, only 43.3% of 14 to 18 year olds are able to do such problems correctly. So 14 से 18 साल के से 43.3% लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं. This skill is usually expected in standard 3-4. ठीक है, तो ये सब बता रहे हैं कि there are issues, है ना, कि 14 से 18 साल का बच्चा जो है ना, more than half struggle with division 3 digits by 1 digit. क्या मतलब हुआ, अगर कोई 3 डिजिट है, मान लो 7 1 6, इसको आपको डिवाइड करना है, मैं बोलूं 3 से, 3 डिजिट को 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है. अब ये एक 43.3%, 14 से 18 साल का बच्चा 43.3% बच्चा ही सॉल्व कर पा रहा है, यानी आधा से कम बच्चा इस मैथ को सॉल्व कर पा रहा है. ये बेसिक सा मैथ्स है. ओके, सो इट मींस दे आर सेइंग इट कि यस, दिस स्किल इज यूजुअली एक्सपेक्टेड इन क्लास 3 और 4. ये चीज तो क्लास 3 के बच्चे को आनी चाहिए, 3rd और 4th ग्रेड के बच्चे को आना चाहिए कि अगर हम 7 8 16 को 3 से डिवाइड कैसे करेंगे. बट द प्रॉब्लम इज दैट इवन अ 14 एंड 18 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, 14 से 18 साल का बंदा तो 9 से लेकर 12 के आसपास रहता है ना, 9 10 11 12 में होता है 14 से 18 ईयर्स का एज का बच्चा, है ना, और यू कैन से 8 से कह लो. ठीक है, 8 से 12 9 11 12 के आसपास होता है ना. तो दैट इज एन इशू, दे हैव रेज्ड इट एंड ऑल. तो ये आपको पता ये होना चाहिए कि एनजीओ प्रथम जो है वो अक्सर जो एसर रिपोर्ट लेकर के आता है, और अभी जो एसर रिपोर्ट था उसका टाइटल था बियॉन्ड बेसिक्स. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, व्हाई डिड ईरान कैरी आउट स्ट्राइक्स इन इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान, वी हैव डिस्कस्ड इट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ठीक है, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.